Friends, good morning. Welcome to Market Discussion with SD. मैं हूँ SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। याद रखिएगा, किसी का सुन के ट्रेड करना is very bad, including me. So this is definitely not our trade recommendation. Of course, this is the look to the overall की market situation क्या है, but आप लोगों को जानना चाहिए कि I am not a SEBI registered analyst. So you should always be careful of or market the situation anyway. It does not matter whether it's SEBI registered or not registered. Both can make the loss, both can make the win. But you should always be careful when you are taking decision about your money. That is very important. मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी का सुन के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए. अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्प हो रहा है, then that's great. आप I'm a मल्टी एसेट ट्रेडर, इन्वेस्टर, एनालिस्ट. आप मेरे साथ और जुड़ सकते हैं if you go to SEE in indioshanandodas.com. There you can check the live insights जो आपको मेरे YouTube पेज पे लेके जाएगा, and you can also connect with me via X, that is Elon Musk's X, and previously which was known as Twitter. So different, and this is my profile, and different तरीके से आप मेरे साथ और जुड़ सकते हैं through website, YouTube और X. So चलिए ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन देखेंगे. याद रखिएगा, ये सिचुएशन देखने में मैं लार्जली मेरा स्पेशलाइज्ड सेटअप यानी फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ. Let's look at first we'll go to the weekly chart. और मेरा जो स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर इनका आपको एक्सेस दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा अंडर इनवाइट ओनली. इनवाइट ओनली के अंडर गो टू SD रेनबो wave V2, that is the risk master. Risk master is basically the V2, and once you just go and apply it, and it is applied. So we'll go to the weekly chart. Weekly chart is overall drawdown. As we can see, overall equity as an asset class is not bad. Overall safe दिख रहा है. Sustained कोई turmoil risk नहीं दिख रहा है. मतलब जो drop down correction, those are more shallow दिख रहे हैं. इंडिया का इक्विटी रिस्क फैक्टर जो मेन है, that is downside risk in decline. बाकी जो ड्रॉडाउन रिस्क, दिस इज एज पर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट अभी भी सेफ नहीं दिख रहा है. बट व्हाट वी कैन नो इज वी आर क्लोज टू द रिसेशन, एंड सो लुकिंग एट द ओवरऑल निफ्टी का सिचुएशन, या इट इज स्टिल लुक्स अ बिट ऑफ कंसर्निंग ओवर द लॉन्ग टर्म. And with Donald Trump का हम लोग का approach, well, Donald Trump is approaching with his tariff, our Prime Minister traveling to Washington DC to meet him. So a lot of expectations during that time. So तब जाके और भी situation माहौल probably will become good for long-term investment also. Now डेली चार्ट के हिसाब से which is more mid term swing, थोड़ा cautious रहने के लिए बोला जा रहा है for short term. So कौन सा स्टॉक आप चुने, बहुत केयरफुली चुनिएगा. याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन गेम ऑफ थीम है ये गेम का. It's not about which stock is the winner, it's which stock is the best loser wins in this game. So overall माहौल सेफ है इक्विटी के लिए. So even if and India का equity risk is also in decline, so this is very good news. That equity का जो upside movement, it looks bit safe and further upside होने का possibility होते हुए दिख रहा है as per risk structure. नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं 125 मिनट्स पे और 125 मिनट पर चार्ट which is more short term swing. उसमें सिचुएशन दिख रहा है मोर सेफ, यानी शॉर्ट टर्म स्विंग इज मोर सुटेबल राइट नाउ फॉर बाइंग. बाइंग के लिए मोर सुटेबल है शॉर्ट टर्म स्विंग यूजिंग 125 minutes chart, whereas long term investment looking at the weekly chart is not still good right now.
एंड सो ओवरऑल एनवायरनमेंट राइट नाउ उतना इक्विटी रिलेटेड रिस्क कम है, एंड जब कम रहता है दिस इज पॉजिटिव रहता है मार्केट के लिए. सो अच्छे स्टॉक्स वेरी लाइकली दे आर गोइंग टू रिकवर. सो रिस्क मास्टर के बाद आई विल अप्लाई द एसेट मास्टर एंड द RSI X to look at the current market ka situation. This is the 125 minutes. A correction is happening natural, क्योंकि बहुत फ्लैट लाइन से ये ब्रेक हुआ है. सो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज गॉन फ्रॉम द बुल्स. सो दिस कैन गो फॉर अ बिग लॉन्ग कंसोलिडेशन. यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है बेस. सो लोअर बेस इज अराउंड 23,200 टू 23,300 एरिया. सो ड्रॉप इज पॉसिबल. बट इज दिस अ डिक्लाइन की फिर से डाउन साइड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कई सारे सपोर्ट है टिल 23,200 एंड ये एम्प्टी लाइन भी आ रहा है टू गिव सपोर्ट इन फ्यूचर. सो मुझे जो दिख रहा है, आई थिंक एज पर चार्ट स्ट्रक्चर मुझे और कंसोलिडेशन दिख रहा है. या इफ इट इज बुलिश, मुझे ये दो पाथ सबसे बेहतर लग रहा है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूवमेंट हुआ ऑन द अपसाइड, इट वाज नेचुरल कि बुल्स का ताकत चला गया फॉर दिस फ्लैट लाइन ब्रेक. अब एक पॉसिबिलिटी था कि डायरेक्ट ये जोन को हिट करेगा. इट विल हिट दिस जोन एंड देन विल कैन गो फॉर कंसोलिडेशन और फर्दर ब्रेक. लेट्स चेंज द कलर. Different probabilities are regarding this. It could have been direct break. It could have been one comeback and then break. Many possibilities. And currently what we are seeing that it is now falling. Now it has direct fall probability. It will decline into this hole and then remain range bound. This up and again range bound. ये जो range bound का probability that is looking more like. हम लोग राइट अलर्ट प्लेस कर देंगे. Price action bullish alert will be enough because that is the minimum criteria to get into bulls again. And upper side this would be our range 24,100. Lower side the range could be 23,200 to 300 area. So long consolidation is looking more likely looking at the 125 minutes chart. अब हम लोग थोड़ा डेली चार्ट में चले जा रहे हैं, which is for the right swing. गुड स्विंग के लिए जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, इट इज एक्सपेक्टिंग टू बी रेंज बाउंड. ये रहा रेजिस्टेंस. एकदम से जो राइज हुआ था, ऑब्वियसली लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस आर देयर नियर दिस एरिया. सो लॉन्ग कंसोलिडेशन करके फ्यूचर में ब्रेक इज लुक्स लाइकली. कई सारे फ्लैट, लॉट ऑफ फ्लैट रेजिस्टेंस. So Nifty is, I think, will be more likely range bound in the longer picture. Means 25,000 अगर कोई अप्रोच भी कर रहा है निफ्टी और 24,800, it will be gradual and zigzag होते हुए range bound. मतलब means even if say Nifty is bullish, I think it will be more like this. Some good news, then again drop. So this, even if say again goes up and again drops, so it will be, even if it goes up, it will be more in a zigzag fashion. So during इस ये जो zigzag, इसमें सौदा काटने का शंका रहता है, बैड ट्रेड्स होने का चांस रहता है, जंपिंग इनटू ब्रेकआउट फेलियर्स का चांस रहता है. नॉट ग्रेट. Current probability structure में ये resistance है on the upper side 800 and lower side is 23,000. big range and much bigger range will be 24,000 और 23,000. ये जो बड़ा range ये लग रहा है कई दिनों तक मेंटेन्ड होगा. अब हम लोग चले जाएंगे वीकली चार्ट पे. वीकली चार्ट में भी सॉ द करेक्शन लास्ट बार जो हम लोग डिस्कस किए थे निफ्टी के बारे में. It is always better as per the SEBI regulations that we do not get into individual stocks,
बट एक ओवरऑल मार्केट सिचुएशन हम लोग समझ ही सकते। तो ये जो सेल सिग्नल, दिस इज सेल सिग्नल जो चल रहा है स्टेडीली नीचे की तरफ जाके ये राइट एरिया पे करेक्शन ले रहा है। स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है, 12 में से 6 फैक्टर टर्न बुलिश, 4 फैक्टर इज बेरिश and 2 factor around neutral. 57% chance in weekly case still consolidation. So overall situation as per weekly chart, some comeback from an expected area, but is this a reversal, long-term reversal? At this point, it is right now difficult to say. There is still the downside probabilities exist. ऊपर के साइड जहां पे मार्केट का रेजिस्टेंस लेने का एक्सपेक्टेशन वाज देयर कि 720 एरिया से लेके ये जो फ्लैट लाइन बन रहा है फ्रॉम दिस, नाउ इफ यू ब्रिंग द कैंडल और द लाइन चार्ट, वी कैन सी फ्रॉम द एग्जैक्ट दोज एरियाज इट हैज टेकन द रेजिस्टेंस. So now overall I think this is the correction, and if it cannot just return to the buying side with the new rainbow buy signal, this risk remains. Yeah, it can move to further decline. Further decline का possibility remains very strong. So ये probability अभी तक दूर नहीं हुआ है, डिमिनिश हुआ है कि डायरेक्ट फर्दर फॉल का, बट दूर नहीं हो गया एकदम कंप्लीट. So that's all friends on the Nifty side. Now we'll look at the Nifty 500. That is more important for stock. Stocks के लिए Nifty 500 को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है. Weekly chart Nifty 500 similar correction still not good enough. और डेली चार्ट हम लोग डिस्कस किए थे, या वी गॉट द बाय सिग्नल, मेन रेजिस्टेंस के पास इट इज देयर फर्दर, एंड आई थिंक इवन इन द लॉन्गर टर्म मुझे जो दिख रहा है एटलीस्ट टिल मार्च अराउंड इट लुक्स लाइक मोर कंसोलिडेशन, और अगर आप भी हो रहा है तो ग्रेजुअल राइज. मे बी पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प का मीट विल लेट निफ्टी ब्रेक दिस रेजिस्टेंस and turned somewhat positive, but it has a lot of resistance to cover still. Can this be a recovery? Yeah, it can, but it is still a long way to go to suggest, yeah, Nifty is now ready or Nifty 500 is ready to cross this barrier and go big. This is the important correction to it. Has looks like the reversal, but is it going to be big reversal yet? Crossing the mountain top resistance doesn't look like that way. Lot of resistance, lot of range bound price action मुझे heading towards future. Way the chart structure of the rainbow का chart structure जैसा हो रहा है, उस हिसाब से मुझे और आगे consolidation मिल रहा है. इस जगह पे प्रॉब्लम है, अगर आप चुन के स्टॉक्स नहीं लेंगे और राइट जगह पे एंट्री नहीं करेंगे, there's breakout failures, comeback, इसके zigzag nature of the market से आप entry exit ज्यादा करें. तो एक बैलेंस की बात है, हम लोग ओवर ज्यादा लॉस भी नहीं कर सकते और zigzag में भी. तो इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक्स चुन के लेना और कितना क्वांटिटी आप पार्टिसिपेट स्टिल कर. बट या विद दिस buy signal, there are some areas we can look into, some stocks we can probably look into, but याद रखिएगा this game or this trading investing is very risky, मतलब you can lose all your money. Always be careful and make proper due diligence while you are trading and investing. So we have taken a look at Nifty 500 ka situation, Nifty, and we will risk master also, and last to cover up end we will go to 125 minutes chart
एंड एक बार देखेंगे ऑप्शन मास्टर क्या सजेशन दे रहा है। अभी ऑप्शन मास्टर का सजेशन आ रहा है एज पर द क्रेडिट साइड ही हम लोग देखते हैं। काफी टाइम से अब आ रहा है कि हम लोगों को लार्जली क्रेडिट स्प्रेड यानी पुट स्प्रेड बेच के ही खेलना चाहिए। सो पुट स्प्रेड बेच के खेलने का ही हम लोग का टाइम है ये। मतलब ऑलवेज सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और जो लोग ऑप्शन नहीं जानते डोंट जंप इनटू दिस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दिस इज जस्ट टू लुक एट, इट्स नॉट अ ट्रेड सजेशन, क्योंकि ट्रेड देखेगा कोई भी देख सकता है, काफी टाइम से चल रहा है। तो आप जंप कर लेंगे, आपके पास तो रेनबो सेटअप नहीं है। सो वंस अगेन यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन एंड ट्रेड एंड देन गेट इट। मतलब आप किसी दूसरे का सुन के बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1। Thank you so much, everyone. All the best wishes from my side to your trading. And as always, happy trading.